Good morning, all of you. I am Dr. Surya Shaheen, and today I will discuss the topic effective communication in everyday life. This topic is in the syllabus of Delhi University. I will deal effective communication in everyday life and skills to develop effective communication. So, what is effective communication? Effective communication refers to the process of exchanging ideas, thoughts, feelings, emotions, and knowledge so that the information or the message is received and understood with clarity. As we know, communication is the part of our everyday life, whether we communicate in person or on the digital platforms available to us. But have you ever thought of how much part of your communication reaches the intended audience or the person you want to send the information? So, effective communication demands to be clear and complete with what we are trying to express or convey the message. Communication takes place in many forms. They are verbal, non-verbal, visual, and listening. It can occur in person or on the internet through social media and websites, over the phone or by mail. But effective communication involves learning the skills to exchange the information with clarity, empathy, and understanding. Means the sender and the receiver both should feel satisfied on communicating effectively. Okay, now I will deal skills to develop effective communication. So the first is listen actively, or we can say focus on the speaker. You should listen attentively to the person speaking to you. Listen carefully is the ability to accurately hear and understand the message and information. You can listen carefully to comprehend and clarify the information and concepts rather than just to answer the question. How do you identify active listening? Active listening indicates that you are completely attentive to the speaker's words, tone, and body language, or we can say non-verbal language, to understand the subject matter clearly. मतलब जब आप अटेंटिव होकर स्पीकर के वर्ड्स को सुनते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट मैटर को ही नहीं समझते हैं, बल्कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं स्पीकर के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए भी। इसलिए जब भी आप लिसनर का रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि स्पीकर के वर्बल लैंग्वेज के साथ साथ उसके नॉन वर्बल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर पे भी उतना ही ध्यान देना और समझना। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर योर ऑडियंस. To make effective communication, it is necessary for you to make sure what you are and who you are communicating with. Since you are a speaker here, so you must be aware of the type of audience with whom you engage with your talk. Knowing your audience can be a key point that will guide you to deliver the right messages actively. As a speaker, you must be aware of the age, educational level, ethnicity of the audience so that you will deal the subject matter accordingly to reach the message to the audience. क्योंकि आप यहाँ स्पीकर है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ऑडियंस को आप एंगेज करने जा रहे हैं और ऑडियंस किस टाइप के ऑडियंस के सामने आपको मैसेज डिलीवर करना है जिससे आप उसी अकॉर्डिंग ऑडियंस को एंगेज एक्टिवली कर पाएंगे और राइट मैसेज ऑडियंस तक पहुंच पाएगा. नाउ थर्ड इज बी क्लियर एंड कंसाइज. As we know that communication is mainly about word choice.
Communication is mainly about word choice, and when it comes to word choice, less becomes more. Once you have identified your audience and their intentions and desires, you can communicate effectively to ensure your message is clear, correct, complete, concise, and compassionate. You can outline explicitly and carefully what type of information or message you want to convey, and that will help ensure that you include all necessary information. You should avoid unnecessary words and overly flowery language so that it will not distract the audience in receiving the message. Sometimes, while delivering the message, repetition may be necessary in some cases. Be sure to use it carefully. Repeating your message can ensure that your audience receives it comfortably, but too much repetition should be avoided. Too much repetition should be avoided because too much repetition can distort the flow of the message. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर को चाहिए कि जो कुछ भी वो मैसेज डिलीवर्ड कर रहा है वह क्लियर और कंसाइज हो। कम्युनिकेशन करते टाइम स्पीकर को वर्ड चॉइस को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करना चाहिए कि कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। कई बार स्पीकर वर्ड्स सेंटेंस को रिपीट भी करता है मैसेज डिलीवर करने में, तो कुछ केसेस में रिपीटिशन ज़रूरी होता है इंफॉर्मेशन को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि बार बार रिपीटेशन ना करें जिससे कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए और ऑडियंस तक राइट मैसेज ना पहुँचे। क्लियर? Next is be mindful of your non-verbal communication. Our facial expression, gestures, and body language indicate and express more than we speak in words. According to Albert Mehrabian, who is a researcher and who pioneered studies on body language and interprets that communication is 55% non-verbal. Communication is 55% non-verbal, 38% vocal, which includes tone and inflection, and 7% words. If you are aware of others' body language and gesture, you may be able to adjust your communication tactics appropriately. Non-verbal communication supports in exchanging the message easily all the time. कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मेजर रोल फंक्शन करता है। जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान में रखते हुए अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज एक्सचेंज में आसानी होती है और रिसीवर तक करेक्ट मैसेज पहुंचता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हम वर्ड्स से ज़्यादा जेस्चर और नॉन वर्बल तरीके से वर्ड्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं जो रिसीवर तक ईजिली पहुंच पाता है। ओके, नेक्स्ट इज बी माइंडफुल ऑफ योर टोन. Your tone of voice indicates a lot to carry your information. Your tone of voice while exchanging communication not only conveys your information but also feelings, emotions, and intentions. How do you say something can be just as important as what you say in words. But your tone can add part and emphasize to your message, which can help to clear the expression what you exactly want to tell. While speaking, tone includes volume, intonation, projection, and word choice. A well-chosen word with a positive connotation creates good and delivers good message, while a poorly chosen word with unclear or negative connotations can create misunderstanding. You should be mindful of your tone also when you are writing some confidential things.
When you are writing an application, letter, or other important things, be mindful of your tone as well as message. You should read it twice to make sure if you have used appropriate words as well as tone. Make sure it. Also, when you are engaging heated arguments over WhatsApp or emails or other written medium, you should keep in the mind that don't be too hasty in your replies. मतलब हमारा जो टोन होता है कम्युनिकेशन में वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है. कम्युनिकेशन करते टाइम वर्ड चॉइस के साथ साथ टोन को ध्यान में रखकर कम्युनिकेट करना चाहिए. यानी किसी बात को सॉफ्ट टोन में बोलते हैं तो उसका गुड मैसेज जाता है, लेकिन अगर हम उसी वर्ड्स को रफली टॉक करते हैं तो उसका बैड मैसेज जाता है. और सिर्फ बोलते टाइम ही नहीं बल्कि अगर रिटन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जैसे व्हाट्सएप ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको इस अपने टोन को ध्यान में रखते हुए मैसेज लिखना चाहिए. और जब कोई कंट्रोवर्शियल मैसेज या हीटेड आर्गुमेंट का सिचुएशन हो तो आप कोशिश करें कि जल्दीबाजी में मैसेज सेंड ना करें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप ज़्यादा रफ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या होगा कि कंट्रोवर्सी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है. ओके, नेक्स्ट इज यूज द राइट मीडियम or platform. Effective communication needs a right medium or platform to communicate subject matters. Okay, effective communication requires you to consider whether you need to meet in person or through digital mode. What I want to tell you that you might choose the priority level and the type of communication needed. Suppose if you have to deliver a lecture in a university, what will you do? So you have to decide whether the students prefer to attend that lecture in online mode or they are comfortable in offline mode, means meeting in person. If the students prefer to attend your lecture in offline mode, then you should follow the same platform what they prefer. You have to choose the right medium or platform which is appropriate for the current situation. मतलब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए राइट मीडियम और प्लेटफॉर्म का यूज करना जरूरी होता है. आप अपने ऑडियंस को किस मोड में, किस थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एंगेज करना चाहते हैं यह आपको ध्यान में रखना चाहिए. जो भी मीडियम या प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाह रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए वह एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए करंट सिचुएशन के लिए. क्लियर? So overall, effective communication is all about understanding and connecting with others by following the principles of communication. By listening actively, speaking clearly, considering your audience, clarifying your communication, being mindful of your tone, being mindful of non-verbal communication, using the right medium or platform, you can communicate more effectively and build a strong relationship in your everyday life. So these are the skills to develop effective communication. So thanks for today. We meet in the next class.